Salam everyone, this is Sumi aka Sumaira Khan and bringing you What's Going On by Sumi, powered by Deplex. Every time we bring you exciting guests, fashion trends and so much more here on this one show. Moving on, the first segment of the show, ladies and gentlemen, we're going to bring you the latest trends by Deplex. And flowers in her hair, but she was her own best friend, the only one who paid the rent. Black satin camisoles rolled a sandy road. Every night it fit just right to wind up on the floor. Sandy, let me pay the rent. Your olive skin was pale the same. Welcome back, ladies and gentlemen. We're back with the interview series, and as you guys already know, we always have special guests, and this one is yet another special one. I'll tell you why. Ladies love him, and also men. They respect him, and he has earned a place of his own in this industry. Ladies and gentlemen, this is very handsome, and this is Imran Abbas. How are you? Wonderful. It's so good to have you. Thank you so It's been a much. while I've been wanting to interview you, and it's very kind of you that आप आए हैं time निकाल बहुत के. बहुत शुक्रिया जी. I'm also very happy because I am definitely a huge fan of Musarrat Baji. बिल्कुल. And this organization, Deplex, is very close to my heart. I have done lots of shoot for them, and I'm very happy that finally, after a very long time, I'm coming back with the same group of people. And the bond that you develop in all these years. Yeah. Yes. My early days shoots are like when छोटा सा बच्चे वाला मुंह नहीं होता आपका with baby cars. उस वक्त भी मैं मुसरत बाजी के साथ काम करता रहा हूँ, and she has been always very, very kind to me. So I'm very happy that finally, after probably 15 years, we are working. I'm coming that's under a the same long organization, I must say, yeah. Yeah, absolutely. But Imran, your journey has been a long one. If you look back in time, when was the first project that you did? Oh, okay. It dates back to कौन सा साल? I started as a child star. You did? Yeah. So it's been a while. It's been a while. बहुत ज़्यादा पुरानी बात भी नहीं है मेरा बचपन. लेकिन yes, I remember I was in class 4. I used to come as like तरह सा बच्चा, फिर थोड़ा सा बड़ा हुआ, फिर तो मुझे हमेशा से कुछ शौक था गाने का, and आवाज़ अच्छी थी, तो इसका शौक मुझे मिला आज, by the way. मैं समझी कि मुझे शौक था और आपको शौक, और मुझे शौक हो गया कि इनको शौक है और वो एक्चुअली गा रहे हैं. So that's amazing. तो बहुत पुरानी बात है, but yes, जब दोबारा मतलब जब बड़े होके काम शुरू किया, तो that was after NCA. I did NCS architecture from Lahore. It has a culture of its own. वहाँ की तो दीवारें भी आपको सिखा रही होती है ना. यहाँ की तो मुझे, क्योंकि मैं बड़ा चीज़ों को आर्किटेक्चरली देख रहा होता हूँ, तो एवरी स्ट्रीट, वहाँ के जो विस्टास, दरख्तों का एक हर चीज़, आपको एक अपना एक वो होता है. From architecture to acting, how did that happen? कई दिनों की बात है कि I was उस दिन मेरी कुछ, थोड़ा सा डिप्रेशन में था, मेरे कुछ किसी अच्छे किसी चीज़ में मार्क्स नहीं आए थे किसी सब्जेक्ट में. So I was very depressed, and there was a friend of mine, he was a journalist, and he was a filmy journalist. पाकिस्तानी फिल्मों का मुझे बड़ा शौक था हमेशा से. So he asked me to, यार चल बाहर चलते हैं, और वहाँ एक रीमा की शूट हो रही है कहीं. अच्छा. रात को बादशाही मॉस्क लिट की हुई है, तो मैंने कहा यार ये तो बड़ा रेयर एक साइट होगी. बिल्कुल. तो वो फिल्म थी मुझे चांद चाहिए, जो शान ने डायरेक्ट की थी. अच्छा. So I was a huge fan of Reema. मैंने कहा यार चलो आज रीमा को करीब से देखते हैं. Now Reema is like one of my dearest friends. अच्छा. She is the dearest friend. अच्छा जी. तो वो वक्त था, और एक अब, लेकिन मैंने वो फिल्म की शूट देखने का, वहाँ मुझे ख़ाबर रियाज मिले. अच्छा जी. एंड ख़ाबर वाज लाइक मॉडलिंग करनी है. मैंने कहा मॉडलिंग में तो नहीं मुझे कोई शौक नहीं है, सीरियसली मुझे मॉडलिंग का कोई शौक नहीं था. लेकिन उन्होंने मुझे अपना कार्ड दिया, और
बस उसके बाद मैं छुट्टियों पे चला गया, फिर वापस आया तो मुझे पता चला खावस भाई ने 2-3 दफ़ा कोई हॉस्टल में हॉस्टलाइट था तो वहाँ आए थे और उन्होंने कहा कि वो लड़का जो यहाँ रहता है उसको वो उससे मॉडलिंग करवानी। फिर मैं गया, पहला ही शूट मेरा कोई किसी मैगजीन का, विजाज एक मैगजीन था जो कि अब शायद डिसकंटिन्यू हो गया या शायद चल रहा है, तो उसका मेंस कवर, पहला मेंस कवर वो मेरा था। So, मैं तो बड़ा यार सीधा कवर वो कोई फोटोशॉप और कोई ऐसा ज़माना नहीं था, कोई एडिटिंग का ज़माना नहीं था वो। तो मैंने कहा यार ये तो मैं बड़ा प्यारा लगता हूँ, तस्वीरें खींचने के बाद तो मेरी शक्ल बड़ी प्यारी। वहाँ से फिर एक वो शौक चढ़ा, फिर एक के बाद एक शूट्स मिलने शुरू हुए, अच्छे कैंपेन्स आनी शुरू हुई, तो वो एक तो उसका नशा ही और था कि आप एक दिन जाओ इतने सारे पैसे मिल जाएं, तो बस वहाँ से फिर वो चल। Talking about work, you've also gone across the border and you were very, very famous over there as well. People have been watching your dramas also, and you have a great fan following over there. So how is it different working here and there? You know, also like internationally doing other projects. How do you see the difference working so many years? Sumi, I am one of those most fortunate एक्टर्स। मैं ये नहीं कहूँगा कि इंडिया में काम करना या कहीं भी काम करना, जब आप बॉर्डर क्रॉस करते हैं तो उसका मतलब है कि आपको रिकग्निशन मिली आपके मुल्क से भी बाहर। सबसे पहली मुझे ऑफर जिस डायरेक्टर ने की थी वो राजकुमार संतोषी थे, जिन्होंने लजा, दामनी, घातक, घायल, अंदाज अपना यू नेम इट, लाइक वो और बहुत सारे डायरेक्टर्स ने इससे पहले भी की थी जो कि लेकिन मैं जो रिकग्नाइज्ड बड़े डायरेक्टर की बात कर रहा हूँ, राजकुमार संतोषी थे जिन्होंने 3 फिल्मों के कॉन्ट्रैक्ट में लिया था मुझे। फिर उसके बाद विशेष फिल्म्स महेश भट्ट की तरफ से, धर्मा की तरफ से, टी सीरीज, यश, मतलब यू नेम इट ऑल, संजय लीला भंसाली की तरफ से, सारे बड़े डायरेक्टर्स के साथ मैंने काम या तो किया, मुजफ्फर अली साहब जिनके साथ मैंने जानिसार की, या उनकी तरफ से मुझे ऑफर्स आई। तो मैं बहुत अपने आप को इस मामले में खुशकिस्मत समझता हूँ कि मेरे काम को एटलीस्ट पहचाना गया, और आपकी पहचान आपके मुल्क की पहचान होती है। और अब जो मूवीज बनना शुरू हुई वो तो पेंडेमिक एक आ गया है, which is like a big situation worldwide. Keeping that aside, जो इतने सालों से, पिछले 3-4 सालों से बैक टू बैक मूवीज बन रही हैं, टीवी छोड़ के लोग मूवीज की तरफ आ रहे हैं, where do you see that culture going? इंशाल्लाह बहुत आगे जाएगा। बस दुआ यह है कि सारी दुनिया के हालात सही हों, क्योंकि ग्लोबली जो है बहुत इफ़ेक्ट किया है सिनेमा को, हॉलीवुड से लेके टॉलीवुड, सारे वर्ड्स को, सारे वर्ड्स में आग लग गई। बिल्कुल। तो बस दुआ करें कि सब कुछ सही हो जाए। Have you ever like felt the urge of becoming a director or producer? Yeah, at times, yeah, I do feel that. और मैंने कई दफ़ा कोशिश, लेकिन मुझे लगता है कि ये बहुत मेहनत का काम है, इट्स वेरी डिमांडिंग, इट्स वेरी टाइम कंज्यूमिंग, सो यू विल हैव टू बी प्रैक्टिकली you should get into the skin of this direction or production or whatever you're doing, but you cannot do it parallelly. अगर आप एक्टिंग कर रहे हैं तो फिर आप ये नहीं कि आप सामने चल के भी आएंगे और अच्छा भी मेरा शॉट तुम ले लो मैं आगे जाऊँ। आपको फिर वो छोड़ के सिर्फ डायरेक्शन ही करनी होगी, क्योंकि ये आपको एक्टर से भी 10 घंटे पहले सेट पे आना पड़ेगा, आपको रेकी के लिए भी आना पड़ेगा। Absolutely. One character जो आपको लगता है कि मुझे यही रहना है, मैंने बस ऐसे ही रहना है। That was खुदा और मोहब्बत में हमाद का जो रोल था। That was the only serial which was shot twice in the history of Pakistan. With Twice? Yeah. Why? You do things twice. You just spoke about another show that you went on. And that was off the camera, but yes, as in what? What did I do twice? Okay. वो एक पाकिस्तान की हिस्ट्री में एक ऐसा ड्रामा था जो जिसमें आज से 8-10 साल पहले वो बना था और वो सुपर हिट हुआ। उसके बाद उन्होंने उसका सीजन 2 बनाया तो उन्होंने कहा कि अब तो वो कहानी को जब आगे लेके चलेंगे तो पुराने वाला तो बहुत ऑब्सलीट हो गया है टेक्निकली भी सब कुछ, तो उन्होंने दे शॉट द होल सीरियल अगेन विद द How was doing that, like doing everything all over again? मैंने तो उसमें बहुत अच्छा किया था, मुझे दोबारा I tried to polish my role, but I think the one which I did before that was more raw and that was more, I think there was something very magical and spiritual about it. So how do you switch between characters? I know you do like one play, एक shoot से फारिग होते हैं, and then within like 4 hours you go to another shoot and become another person completely. मेरा एक वक्त में मेरा नाम यूसुफ चल रहा था, अलविदा चल रहा था, खुदा और मोहब्बत चल रहा था, कुछ simultaneously, and all those 3 characters were like poles apart from each other. And अगर उसमें इमरान अब्बास को आप देखेंगे तो इस वाले इमरान अब्बास से आपको बिल्कुल लगेगा कि कोई और ही आदमी है, कोई और ही लड़का है। And I think that has added to their career, to their fame, whereas you guys were completely organic.
वो Yeah. PTV का टाइम, STN का टाइम, दो PTV चैनल, से थोड़ा सा मैं बात कहूँ तो बिल्कुल ही आपने तो मुझे क्या बना दिया आपने मुझे PTV. Yes, but I work for PTV. Yes, I work for PTV. You have worked for PTV. Yeah. Do you feel any pressure now because your life is like completely out there? Yeah, no, it's the time for the survival of the fittest now. Yeah, you'll have to be super perfect. आपको six packs भी होने चाहिए. हाँ. आपकी ये भी शर्ट तो भी वो कभी भी. उतारने की जरूरत पड़ जाएगी. अच्छा. Your if you are modeling, then your jawline should be strong. Your eyes should be Right. wide open. हाँ. Your attitude. आपको डांस भी आना चाहिए. आपको सब कुछ आना चाहिए. How are you in dancing, by the way? I'm very bad at dancing, by the No, way. no. Yeah. No. मैं वो जो शादियों पे भी नहीं नाचते. मेरे जो अगले जनरेशन है ना, मेरे भांजे भांजियाँ भतीजियाँ वो तो कमाल की उनकी लर्निंग स्किल्स हैं. वो जब मैं उनके बीच में खड़ा होता हूँ तो वो अपने जो फिल्मों में गाने कहते हैं आप प्लीज आप भी ना इस पे भी ना नाचें आप हमारा भी खराब कर रहे हैं. बस ये मेरी एंट्री थोड़ी सी होती है. एक सेलेब एंट्री हो जाती है बीच में थोड़ा सा ग्लैमर ऐड करने के लिए शादियों में. उसके बाद कहते हैं प्लीज आप जरा थोड़ा दूर ही रहे, आप इस काबिल नहीं हमारे साथ नाचें. अच्छा. So talking about social media, there's so much good that we see and watch, but there's also a lot of negativity. छोटी से छोटी बात जो कि आपके दिमाग में भी कभी नहीं आएगी कि this can be taken negatively. So how do you go about that? How do you deal with it? ओवरऑल हमारी सोसाइटी इतनी नेगेटिव हो गई है कि हम अगर न्यूज़ चैनल्स पे भी देखते हैं तो सिर्फ एक खामी निकालते हैं किसी की. हम एक ड्रामा भी देख रहे होते हैं तो उसमें आप अप्रिशिएट करने के बजाय इस पूरे एक फ्रेम के अंदर जो एक मक्खी पीछे से गुजर गई उसको देख रहे होंगे. हर चीज़ के अंदर आपको एक खामी निकालने की आदत हो गई है. हज़रत अली के एक दो कौल बड़े प्यारे प्यारे मुझे जहन में आ रहे हैं इससे कि अगर आप लोगों में खामियां तलाश करने लगोगे तो आप अकेले रह जाओगे. और इंसान में खामी तलाश करने वाली की मिसाल उस मक्खी की होती है जो सारे जिस्म को छोड़ के सिर्फ जख्म पे बैठती है. अभी मैं 12 रबीउल अव्वल को मैंने कहा कि यार सबसे अच्छी बात यह है कि मैं ओल्ड हाउस जाऊँ, किसी की कुछ अच्छा कर जाऊँ. तो मैं सीनियर सिटीजन्स के उसमें चला गया. एक सैंक्चुअरी होती है जो इनका वो होता है. और मैंने लाइव आया कि मैं इनके साथ हूँ सब कुछ. उसमें भी ये बताने की क्या ज़रूरत थी. नीचे कमेंट्स आ रहे हैं देखो कितना बुरा बेगैरत इंसान है कि लोगों को वो पब्लिसाइज. अरे यार मतलब आप बुरा काम करो तो भी ना, ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि आपको पता है कि आपकी फ़ैन बेस है. अगर आपको लोग अच्छे को बुरे को फॉलो कर रहे हैं तो आपके अच्छे को भी फॉलो करेंगे. अब आप कमेंट बॉक्स में जाएं तो इतने उल्टे सीधी बातें लिख रहे होते हैं. कभी किसी लड़की के किरदार के बारे में बात कर दी, कभी किसी की. आप यार अगर आपको एक्टिंग आती है तो प्लीज़ आप आगे खड़े हो जाओ अगर आपको इतना अच्छा काम आता है. इमरान अब्बास ओ अच्छा मेकअप की दुकान फलाना. So you never felt this competition or you never felt challenged by anyone or you took it in a positive way? So I think I have gained what I wanted to, and I have even gained what I didn't even dream of in my life. Yes. So I don't have any competition. I have lived my life to the fullest. अपनी हर एज में अपनी हर करियर की स्टेज पे मैंने जो कमाना था अपनी ज़िंदगी से, मैं पैसों की बात नहीं कर रहा हूँ, जो इज्जत कमानी थी, जो नाम कमाना था और डेफिनेटली पैसा भी वो मैंने कमा लिया. सो आई डोंट हैव एनी थर्स्ट लेफ्ट इन माय for more. For more. How did the pandemic, I mean a lot of people got affected by it. What about you? How did you deal with it? Actually, When it I comes was to corona self-care, positive. what do you do? I've been through this corona 4 months back, yeah. You did? Yeah. It happened? It happened. So you've been through it? I've been through it. Oh. But fortunately, I was not working at that point in time. और उस वक्त खैर सारा काम ही रुका हुआ था. And unfortunately, my father passed away years back. I'm so sorry. तो हुआ ये कि मैं काम ऑलरेडी छोड़ बैठा था क्योंकि मुझे अपनी वालदा का ख्याल करना था. और मैंने उससे पहले एक इंटरव्यू में कहा भी था कि I won't be able to work for another 1.5 years because I have to look after my So you were taking mom. a break, Yeah. yes. तो उनका ख्याल रखना मेरे ख्याल सबसे इम्पोर्टेंट मेरी ज़िंदगी में चीज़ है और था. तो अब माशाल्लाह वो खड़ी हो रही हैं. What do you do to take care of yourself? मेरे लिए सबसे बड़ी जो स्ट्रेंथ है वो मेरा बिलीफ है. एंड माई बिलीफ इन माई अल्लाह इज़ अल्हम्दुलिल्लाह सो स्ट्रॉन्ग. जितना होना चाहिए उतना नहीं है, हमेशा वो कमी रह जाती है आपकी. लेकिन उसने मुझे इतनी ताकत दी है कि मुझे लगता है कि अल्लाह अपने बंदे को उसकी इस्तिताअत से ज़्यादा कभी दुख देता नहीं है. और दूसरी चीज़ ये कि जब वो मेरी माँ की तरह मुझसे प्यार करता है तो वो मुझे कैसे तोड़ सकता है. वो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है तो फिर वो मुझे तकलीफ पे देख नहीं सकता. और ये तकलीफ़ें जो भी इंसान के ऊपर आती हैं ये बेसिकली आपके रुतबे और आपके दर्जात बुलंद कर रही होती हैं. तो ये ट्रायल भी जो है ना ये बहुत बड़ी नेमत है कि ऐसा ना हो कि वो आपको तकलीफ देना भी छोड़ दे. बड़े बड़े अंबिया और बड़े बड़े पैगम्बर और बड़े
बड़े बड़े आइम्मा और जो हैं और वली जो हैं वो इस तकलीफ़ों से गुजरे हैं तो वो उन दर्जों पे पहुँचे. सो इफ़ यू फील योर सेल्फ टू प्रिविलेज दैट you're not facing any problem in life, then there is something wrong happening with you and Allah ka connection. So you'll have to keep a check on it. I like that take on life. But let's go to a lighter mode. Yeah. बहुत heavy बातें होंगी यहाँ पे. So I have stalked you on Instagram. I have stalked you on Instagram, and I've picked out 3 images of yours. Okay. And you're gonna tell me what's the story behind it. All right. Okay. Every picture has a story. Man. It has a story, right? दाग तो अच्छे होते हैं. ये तो मेरे ख्याल से हर बंदा ट्रैवलिंग nowadays relate कर सकता है. या इवन ओके मैंने ये जब लगाई तो इस पे भी मुझे आया आपने अधूरा पहना हुआ है, मास्क नहीं लगाया हुआ, शर्म नहीं आती आपको. मैंने कहा यार ये कौम नहीं खुश होने वाली भाई. ये मैंने इसलिए लगाई थी क्या एक शील्ड आपके बीच में. मैं समझ रहा था कि मैंने बड़ी अच्छी तस्वीर, बड़ी पॉजिटिविटी का काम किया, उस पे भी निकाल लिया. ओहो, but I think this is more than enough, no? I mean, सांस भी तो लेना है. पता है मेरे साथ तो मसला ये है कि मुझे तो थोड़ी देर में मास्क लगाता हूँ मुझे माइग्रेन शुरू हो जाता है, क्योंकि आपकी ऑक्सीजन सप्लाई भी तो. मास्क ज़रूर लगाइए, एक और बात, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम लोग फॉलो कर रहे हैं, लेकिन इतनी भी ब्लाइंडली आप ना कि गाड़ी में अकेले आप बैठे में तो आप लगा के कोई ज़रूरत नहीं है उसकी. बंद गाड़ी है और आप ही अकेले बैठे में, तो फिर आप मैंने देखा कि उसमें भी लोग चल रहे होते हैं, क्योंकि आपका दिमाग भी आपके लिए उतना ही अहम है जितना आपकी बाकी का जिस्म. सो इट कट्स द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन. So talking about solitude, this seems a lot of solitude there. Is a blessing. It's a blessing. Yeah. You think so? Yeah. अच्छा, डर नहीं लगता. Loneliness and solitude are like 2 different things. अकेलापन और तन्हाई अलग अलग चीज़ है. अकेलापन अच्छी बात है, तन्हाई नहीं होनी चाहिए. ये तो बहुत डीप बात हो गई. मैं कभी आराम से बैठेंगे बात करेंगे इस पे. ठीक है. Moving on to the third one. So this one that we have over here. आपने मेरे ख्याल से सिर्फ recent तस्वीर है. ये क्या है? Pakistan's 35 handsome men alive to 2020. अच्छा ये. हाँ ये वाली तो आपने वो नहीं देखा जिसमें दुनिया के 100 लोगों में नाम है पिछले 3 सालों से. No. Yeah. No, really? मैं तो I'm the only Pakistani who's coming in this list for past 3 years. Whoa. Only Pakistan. There's so many nominations, but the person who gets after whole ये सारी की सारी जो polls होते हैं, and the only person who gets selected in the end, आपके सामने भाई बैठा हुआ है. लोग इसमें अच्छा मैंने एक दफा इस पे भी हुआ. इसमें मैंने लगाया कि हाँ शायद इसी तस्वीर पे था, तो नीचे आया अगर आपकी शक्ल अच्छी है तो इसमें इतराने की क्या बात है. इसमें भी मतलब हर चीज में मैं तो कहता हूँ इतने क्रिएटिव हैं आप लोग. जो ये नेगेटिव ये कहाँ से लाते हैं? क्या घर में क्या पकाते हैं सुबह सुबह? कौन सी आप मामलेट खाते हैं? सबसे बुरी बीमारी है मेरा ख्याल है मनफी अंदाज़े फिक्र, मनफी रवैया, नेगेटिविटी. ओहो ग्रेस के सामने बैठा हूँ. नहीं उर्दू अच्छी करो बच्चों. इतने मजे से आपने बोला. Bye, I seriously respect and appreciate all those people who have good Urdu. उर्दू मेरी उनके लिए मेरे दिल में इज्जत कोई 10 टाइम बढ़ जाए. सिर्फ उर्दू नहीं, अगर आपकी पंजाबी भी अपनी ज़बान, अपनी मादरी ज़बान पे आपको बड़ा फ़ख्र करना चाहिए. हाँ, वो जो भी हो आप ज़रूरी आपको आनी चाहिए. मेरी उर्दू ज़बान उर्दू मेरी मादरी ज़बान उर्दू और पर्शियन में थोड़ा सा है. Okay, I speak in Farsi. So I learned my मादरी ज़बान. मुझे तो फारसी नहीं आती. पापा को आती थी नहीं, मैं मुझ तक नहीं पहुंच पाई वो. अच्छा, वो मेरे ख्याल से वो माँ बाप को स्ट्रिक्टनेस करनी पड़ती है कि तुम मुझसे फारसी में ही बात करो. आप फिर स्कूल जाते हैं, बाहर निकलते हैं, सब कुछ तो फिर आपका सारा का सारा वो. Exactly. So I want to get to know you a little bit more, and उसमें ये होगा कि मैं आपसे सवाल पूछूंगी. You have to come up with the first thing that comes to your mind, but you have 5 seconds. Okay. So, one weirdest thing you've ever done to impress someone. Okay, मेरी टीचर होती थी बचपन में, उनके लिए मैं फूल लेके जाता था. Yeah. Every time. Not every time, इतने पैसे नहीं थे मेरे पास फूल के गुलदस्ते लेके जाऊँ. अच्छा. और ना ही मेरे घर में इतना कोई बड़ा बागीचा था. अच्छा. और उनकी शक्ल मिलती थी नाहिद अख्तर से. ओह. तो बड़ा पुराना आदमी हूँ मैं. तो वो जब एक दफ़ा मुझे पता चला छुट्टियों के बाद, गर्मियों की छुट्टी के बाद, तो स्कूल छोड़ के चली गई, तो मैंने स्कूल जाना छोड़ दिया था. उनका नाम था मैडम हमीदा कुरैशी. पता नहीं मैडम आप कहाँ हैं, बट यू वर वेरी ब्यूटीफुल, एंड आज मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरा क्रश था आपके ऊपर. I know you're very very talented, but 2 most useless talents that you have. हाँ मैं बाल अपने खुद काट लेता. Oh, that's a big talent by the way. कभी ना यूँ करके
ये जहाँ डुप्लेक्स की टीम नहीं पहुंच जहाँ सकती डबल टीम नहीं पहुंच सकती वहाँ आप खुद पहुंच जाते हैं। इमरान एंड गाय पहुंच अच्छा। जाते हैं। 3 words that describe you the best. Basic, philanthropist, nature lover. There are so many words. There's so many Nature lover. But why basic, by the way? I'm very basic. I'm very connected to my basics. Like I even like after 20 years in the industry, मेरी जो पुरानी वाली आदतें थी वो अभी तक वही हैं। कोई बचपन की आदत जो आपकी अभी तक है? भूलता बहुत हूँ। Oh, you do? ओह कमाल, अभी आप वापस आऊँगा तो फिर आपका नाम भूल चुका हूँगा मैं। Oh no, that's a bad thing. That's not a good thing. और या एक तो भूलने की बीमारी बहुत बुरी है और अभी तक और कौन सी चीज़ है? मुझे बुजुर्गों के साथ वक्त गुजारने में बड़ा मज़ा आता है, बड़ों के साथ वक्त। So moving on, what's the worst habit you'll never be able to break? You know कि ये बुरी आदत है लेकिन वो नहीं जा रही कहीं। वो वही बात हुई ना, मुझे भूलने का जो प्रॉब्लम है ये मेरी You know कि ये हाँ, but वो आपके हाथ में नहीं है। वो मेरे हाथ में नहीं वो है। नहीं है। और जो हाथ में है और जो मैं नहीं बदल पा रहा हूँ वो ये कि यार each year I decide that I should get married this year फिर काम आ जाता है, चीजें आ जाती हैं and I feel you. My mother must be watching this. तो आगे से आगे बढ़ती जाती है, मेरी शादी की एज भी खत्म हो गई और सब कहते हैं नहीं आपको तो बिल्कुल अर्ली था। सीरियसली मुझे लगता है कि शादी की उम्र 20s में नहीं होनी चाहिए। सुन रहे कोई यहाँ पे, कोई है यहाँ पे होनी चाहिए कोने जब आपको थोड़ी सी अक्ल आ जाए और वो 30s में, लेकिन फिर बहुत लेट भी नहीं होना चाहिए। You think so? बहुत लेट नहीं होना चाहिए। अच्छा। हाँ, बिकॉज फिर आपको और प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं कि आपकी और प्रॉब्लम से मतलब ये कि आपके बच्चों में और आप में फिर एक जनरेशन गैप आ जाता है। और अब तो अब जो आने वाली जनरेशन है वो तो 5 साल के पीछे आप चले जाएं तो वो एक और कौम है, वो एक और ही जहन के बच्चे हैं। वो बच्चे नहीं हैं, वो बच्चे नहीं हैं, वो बड़े ही पैदा हुए हैं। वो बड़े पैदा हुए वो आपको बताते तो हैं। और इसकी बहुत साइंटिफिक रीजंस हैं। ये जो आपकी सारे इंटरनेट ने और आपके ये 3G 4G ने इनके दिमागों को कहीं से कहीं पहुंचा दिया। बिल्कुल, वो चलते पड़ते 3G 4G हाँ, तो वो फिर इसलिए मुझे अब डर लगता है कि यार अब शादी और फिर बच्चे और फिर मैं तो वैसे ही आम लोगों से भी ज्यादा ओल्ड स्कूल हूँ। तो मैं तो अंदर वैसी बुढ़ी रूह है तो अब क्या होगा? अच्छा। So I think the right time to get married is when you get the right partner, first of all. Yeah. And because spending time with someone you don't know and someone you don't like is the scariest thing you can ever Yeah, and why get yourself through that trouble for no reason? उस अकेलेपन से बहुत मेरे ख्याल फायदे हैं उस साथ के जिसमें आप दिन रात पेन से गुजरें। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो उसके लिए तो फिर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, फिर कोई शादी की उम्र नहीं। चाहे वो फिर आप बुढ़े हो जाए, अगर आपको मर्जी का बंदा नहीं मिल रहा या बंदी नहीं मिल रही तो प्लीज इस प्रेशर में आके शादी ना करें, क्योंकि जितनी भी उम्र है peer pressure, family pressure and all of that. That's so true. कोई pressure मेरी नहीं दिल की बात की है इन्होंने। So I'm not the only one, Mama and Musrat auntie, if you're watching this. Now you know that this goes around. इसकी कोई sense and one more, बनती है। इसमें भी शायद मुझे अब ऐसी कोई ट्रोलिंग मिलने वाली है, आपको बस ये वायरल मिल जाएगा होने के लिए एक जुमला। लेकिन सही फैसला करने के लिए भी आप देर ना लगाएं। जिंदगी में अगर आपको किसी से रास्ते अलग करने हैं तो फिर अपनी जिंदगी में आप फैसला करें, और लेकिन उस फैसले को भी आप टाइम लें हर तरह से उस पहलू पे। लेकिन अगर किसी के साथ आप हो गए हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसके साथ जिंदगी चलें, सिर्फ टॉर्चर में सारी जिंदगी गुजारें, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो। कहते थे कि वो अब जनाजा ही वापस आया टाइप, वो अच्छी बात है कि वो कॉम्प्रोमाइज़ करने का आपके अंदर एक वो जुमला जो था वो शायद ऐड कर देता था। आप अब क्योंकि लोगों के पास वापसी के दरवाजे बहुत खुल गए हैं और वो कहते हैं कि बस फौरन नहीं, इतनी जल्दी फैसला ना करें। लेकिन अगर आपको लगता है कि ज़िंदगी में वो शख्स सही नहीं है और आपने फैसला कर लिया है आफ्टर लाइक ह्यूज प्रोसेस जिससे आप गुजरे हैं और आपने सोचने का, तो फिर ज़बरदस्ती उसके साथ ना रहें। Makes sense. Absolutely, absolutely. So a fashion trend that you just do not understand. लड़के जो लड़कियों जैसे कपड़े पहनने शुरू हो गए हैं, आप रैंप पे जाएं और आप को समझ में नहीं आता कि ये उनका ये मेरा जोड़ा था, नहीं ये आपका नहीं था, ये तो बाजी का था। और ये कोई एक फाइन लाइन होनी चाहिए। तो अच्छा ठीक है। लास्ट वन, अ सॉन्ग दैट ऑलवेज गेट्स स्टक इन योर माइंड। वक्त ने किया क्या हंसी सितम। Oh, he is a depressed soul. No, but I like this song. I like this whole ambience of the song, Guru Dutt.
Wahida Rahman, this lighting, this direction, this composition. Right. Thank you so very much for taking out time. You had a very busy schedule, and of course you're here for Masarrat Auntie Ji. She really appreciates it. The Deplex team appreciates it. I appreciate it. And you looked amazing. You were like, I should have been more dressed up, but I was not really prepared good. for this interview. First of all, I was here to see Musrat Baji. Ji. We had a meeting, Ji. and I had to see her place, and I had to see her. So, and she, surprised you. surprised me for this. I hope it was a pleasant one. No, it was seriously, it was a pleasant one, and Thank I you. wanted this interview to be longer. But she seriously surprised me with this interview की call. उन्होंने कहा कि अच्छा मैंने कहा अरे यार मैं तो बड़ा ऐसा आ गया था उठ के. नहीं आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है. पर जाते जाते you promise के आप गाते हुए जाएंगे few lines. अभी अभी तो आई हो बहार बन के छाई हो हवा जरा महक तो ले ये दिल जरा बहक तो ले ये शाम ढल तो ले जरा ये शाम ढल तो ले जरा ये दिल संभल तो ले जरा मैं थोड़ी देर जी तो लूं नशे के घूंट पी तो लूं अभी तो कुछ सुना नहीं अभी तो कुछ कहा नहीं अभी ना जाओ छोड़ के दिल अभी भरा नहीं. So beautiful. Woo! So beautiful. You've gotten like proper training in singing. अच्छा पता नहीं 2 दिन से आवाज़ ख़राब हुई भी है. लेकिन classical training आपने ली हुई है हाँ जी, properly. हाँ जी. Wow, beautiful. So singing career coming our way? इतनी एनर्जी नहीं है यार. नहीं. I think we should do a poll thing. So if you get a poll. वो आएंगे ना फिर मक्खियाँ सारी बैठ जाएंगी वही वाली. उनको बैठने दें. लानत है इसकी शक्ल पे. अब एक्टिंग छोड़ के ये शुरू कर देगा कुछ. वो फिर आप देखिएगा कितना कमाल क्रिएटिव जहन के मालिक हैं लोग हैं. कहाँ से आएंगे उनकी बातें. बट आई थिंक एक्टिंग बहुत अच्छे लोग गा रहे हैं यार. क्या मेरी ऐसी कौन सी कमी पड़ गई है कि मैं भी गाना शुरू कर दूं. शायद मैं कभी कुछ बीच में कुछ निकालूंगा लेकिन प्रॉपर एज अ सिंगर आने का मेरा कोई नहीं. But I think we would want to see Imran singing more. एक दो बीच में कुछ ऐसे ही कुछ करता. Done and done. But thank you so very much once again. Thank it you was a so pleasure much. having you over. Seriously, it was a pleasure for me as well because I thoroughly enjoyed your interview, your questions, and the way you conducted it. And after a very long time, I'm giving an interview with, with so much heart. I'm so thankful. दिल चाह रहा था कि बढ़े और. Thank you. Ladies and gentlemen, that was Imran Abbas and he poured his heart out in this interview. I'm so thankful to him. Moving on to the next segment. Let's see what our experts from Deplex have to say about your questions. Hi everyone, this time around we're doing something very different. Like I said, Deplex के जो experts हैं वो सिर्फ पाकिस्तान तक limited नहीं है. This time around, all the way in Georgia and US, Hafsa को हमने जगाए रखा है. Hopefully she's not too sleepy to join us. Hi Hafsa, how are you? Hi Summi, I am well. How are you? Very well. So excited to have you and hope you're not too sleepy. No, I'm good. I am happy to be here with you guys. Great, amazing. So Hafsa, we've been having experts from Deplex throughout the episodes of What's Going On by Sumi, powered by Deplex. And this time around, it's you all the way from US. And as you know, we have people interacting with us. They have various questions regarding hair and makeup. So there are questions for you. Real quickly, I'm going to shoot the questions at you. And if you could answer them, that'll be very nice of you. Ready? Yep. Okay, cool. So, Huria is sending in the question and she's saying, I recently bought a foundation which doesn't cover my darker upper lip. How to best match the foundation for this specific area? Okay, great question. Thank you, Huria. So when you look at foundation and you look at discoloration on your skin, be it in this area or be it your under eye, you have to use a corrector. You have to use a corrector that will cancel out any sort of discoloration. So if you have very bluish, purplish
shades here. You could use Greenish ho jata hai. right. For You sure. could use a peach corrector. So any foundation that has peach, Krylon is readily available in Pakistan. It has a really nice peach color that you can use as a corrector for this area and your under eye. Then you can put your foundation on there, keeping in mind the foundation matches your skin. If Yes. the foundation is of course of a different color, it's too light or it's too dark, then it's not going to match. So one, your foundation has to match to exactly what your skin and your neck is, preferably both, if not at least your face. And then always use a peach corrector. It will also brighten you up. There's also a company, if you have friends and family in Canada, there is a company called Vasanti Cosmetics. They have Okay. eye brightener peach color meant for the South Asian market. Please check that out. It will honestly change your life. If not, then Krylon in Pakistan. Moving on to the next one, it's Henna, and she's saying my skin is very dull. How to manage that? Hi, Hina. Okay, so I get that question a lot in my DMs. My skin is really dull, and I always ask a series of questions. Why is it dull? Is it dull when you have makeup on? Is it dull when you wake up in the morning? When is it the dullest? Because your makeup is going on top of what you have. So if your skincare routine isn't giving your skin life, isn't giving your skin that glow, then your makeup is going to look dull. If your skin is looking dull, then I tend to see people are using chemicals on their face that isn't meant for them. You know, Right. there is an element of bleach that does go into certain skincare products that is used. In the long run, that tends to dull down your skin. So I would completely avoid that. I would go for a really nice cleanser, toner. A rose toner is amazing, and a moisturizer. And number one is sunblock. If you are not wearing sunblock and you are going out in the sun, your skin is going to look bad no matter what happens. So always stick to sunblock and just stick to a good cleansing routine. And at night, Mhm. do not go to sleep with your makeup on. Do not go to sleep with your skin dry. All right, great. Last question, and this one is by Rafi, and she's saying, no matter what I do, my eyeliner always smudges on top of my eyelid and under the eye. Help! Girl, I am right there with you. We have our good days, we have our bad days when it comes to our eyeliner. So let me tell you, when you're putting on eyeliner, my number one pet peeve is when your eyeliners do not match. People have one thin, one thick, and they think they're done. You're not done. It looks terrible. So that's one. If you're wanting it to stay, you have to make sure your eyes have, because our eyelids get really oily and makeup will transfer. So make sure one, you have an eye primer. If you don't have an eye primer, a regular primer, and then use a foundation, a matte foundation that is drying, like the Maseret Makeup Silk Foundation, all over your lid from your inner corners out. So make sure you get that and you pat it in with powder. Now you've created a base. Go in with a gel or liquid eyeliner. Create the desired shape of your eye and Okay. then take a black eyeshadow powder. This is foolproof. You can use the Sunset palette from the Maseret Makeup range. Take that black matte with a really edged out brush and line so go over that liquid or gel with the powder. It will not move, it will not smudge, it will not go anywhere till you wash it off. Okay, amazing, amazing. So the next segment that we have for this special session that we always line up with Depilix, we pick up 3 looks, which you did actually. And the first one that I have with me is one of my favorite actors, that is Sanam Jung, and she looks absolutely great. Can you see it? I can. I love. Yes, this was, I believe, for the Hum Awards. Mhm. So what do you think about this look of hers? I really like it because it's natural. There's not too much going on, keeping the clothes and the jewelry and everything in mind. I will always put emphasis on the skin prep. So we use the MAC Strobe Cream under her foundation. She is from the Maseret Makeup Silk Foundation collection. I believe she is a fair or a beige that I mix together for her, and then I go in heavy with beautiful layers of highlighter where I need to highlight. And it's always great to mix light and dark foundations, right? It honestly just works beautifully, and I always blend it to her neck and her hairline because, you know, she's so amazing. And for the eyes, we did a really pretty
Just a very simple brown and black eyeliner with a very champagne shimmery eyeshadow. Nothing. Now the way that her eye shape is that it's actually really small, so there's not too much place to work with. So the focus was not to add too much darkness in her eye, was to keep it very light and smoky. But we focused on browns and shimmers. And then for her lipstick, we topped off with like a beigey nude color and with a hint of pink lip gloss. She actually really likes lip gloss. I'm not a lip gloss fan, I'm not gonna lie. I'm a matte person. Right. She loves lip gloss. And for her blush, we used Satin Apricot and Ballet Glow from the Maseret makeup range. And that brought the whole look together. So the next look that we have over here is Hareem Farooq, and I think she looks beautiful. And do you see it? I do. And warm tones again, really flatters her jawline that she has really worked hard on, really. So tell me about this look and how can one recreate it if they want to? For that look, I remember it was December or January, so it was cold. So it was like for me in the autumn, fall months. I know, and I'm a big sucker for this, and so is Hareem, contouring. Contouring is a big deal. Even though she worked on that jawline, she worked on those cheekbones, but she likes her face cut. She likes all of that definition. She wants it. I think, honestly, not to be biased because I've done that look, one of my favorite looks on Hareem. And I think it completely elevated her whole outfit. So a lot of heavy contour and blended it out. We did a liquid contour and powder contour. So we did a mix of both. And for eyes, it was like we used, I believe it was the Huda palette, the Rose Huda palette. So it has a lot of mauve brown colors. So we did that for her eyes with really big lashes and full liner and heavy mascara. The last look that we have is Ariana. Oh, I love that look. So why this look? I love it. It's beautiful, it's simple, and it's fresh, I would say. Yeah, Ariana was a beautiful model. We collaborated with a photographer. Her name was Francesca. Francesca was submitting her portfolio work for the Met Gala. So that is the look that I did for the Met Gala. Wow. Fresh, dewy, young, shimmery, a lot of champagne tones, a lot of pink tones actually. Lip gloss with lip liner. So her face, again, matte foundation, but with the MAC strobe cream under it, with a really pretty highlighter on top. And we did we went over her face with a lot of highlighter. We wanted it to look very pretty and very bright on camera. We didn't want it to look matte at all. But again, matte foundation, because that look had to change. The reason I do matte foundations, it makes my life easier as a makeup artist. And then her eyes was just a really pretty wash of color, pink and a champagne shimmer with very light mascara. And I believe we did a white pencil in her waterline. I finished that with like a lower lash mascara. And her lips were like a peach. I think we used... from the Maseret makeup range, we used Sound the Alarm, but we took a tissue paper and really dabbed it. So it was just a stain on her lips. It wasn't like a bright color. And her cheeks also, I think, were only shell bronze from from the blush collection. Very fresh, very like something that one can pull off easily in spring and summer. It will be perfect for that. You could. It is a no makeup look with makeup on it, but it still looks pretty. It still looks young and fresh, and you will always. I think that look always makes you look happy. You can't happy. Look bad Yes, you always absolutely. Thank you so much, Hafsa, for taking out time. And now you can go back to bed with the baby and relax. And thank you so very much for sharing your expertise with us and with the viewers. Hopefully they're going to be very happy and make use out of it. Thank you once again for joining us, and hopefully I'll see you soon, inshallah. Thank you, Sumi. Thank you so much for having me. I'm always here. So if you have any questions, let me know, guys. Bye-bye. Mwah. All right, ladies and gentlemen, we've reached the end of the show. This definitely would be my favorite episode because Imran Abbas poured his heart out, and I think this is one show that we were totally connected with the latest trends and the interview and so much more that we had in this show. This is Sumi signing off and saying Ba Aman Khuda.